Welcome, Garima, Manasvi, Tanu, Yadunandan. कैसे हैं आप लोग? So welcome everyone once again, and in this weekly session, today we have my co-speaker, Gori. Gori, let me introduce Gori madam. She is a chartered accountant, and she has appeared in the UPSC interview with the Commerce and Accountancy optional, and she is part of the mentoring team. She's already evaluating your copies, and we are working together to take this program forward. So today I have invited her to basically share her feedback, her experience about your copies, right? And it's not only about the copies of any single person, it's about the overall perspective, है ना? जैसे आप लोगों ने भी पहले बोला है कि सर कुछ गलतियां हमें जाननी है, कुछ अच्छी चीजें हमें जाननी है ना? तो who can be better than the person who herself is doing this work day in day out, है ना? तो बेसिकली उनका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, मैं तो आपको साथ शेयर करता ही हूँ टाइम टू टाइम, है ना? मैं तो हर वीक आपसे मिलता ही हूँ, बट if we have the same feedback from more number of people, we'll get more perspectives. So that is a point. So अभी गौरी मैडम आपको उनके तरफ से जो भी शेयर करेंगे वो करेंगी, एंड साइमल्टेनियसली यू कैन आल्सो आस्क योर क्वेश्चंस. ठीक है, आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एंड शी माइट शेयर सम कॉपीज. आपकी कॉपीज भी हो सकती है, हो सकता है कि आपकी कॉपीज ना भी हो, किसी और की कॉपीज हो, इस सेशन में वो नहीं है, उनकी कॉपीज भी हो सकती है. So it's not very highly structured discussion. It's semi-structured, where she'll be discussing few things, and you can also ask the questions, so that we can get more perspectives on answer evaluation and what needs to be done more, and what is there already which we need to continue. Okay, so over to Gori. Hi everyone. Okay, I can see Garima. All others are like video is off, fine. So my experience on like evaluation, like can I share copies or I'll say? Yeah, you can share whatever is your See, I haven't prepared anything, any list of the mistakes or something. I'll take few copies and I can show you what kind of mistakes are there. And in general mistakes, if I tell what is happening, like especially there are two, three categories of students. One, totally the beginner fresher who are starting writing. So their answers will be obviously it will not be at least at the average also. So, for them, what I would suggest, they need to do brainstorming. Because what is happening, they are deviating from the demand of the question. They are writing one part. If the question is having 3 to 4 parts, they are writing 1 or 2 parts, and 1 or 2 parts is gone. Okay, for the beginners. Again, for the beginners, introduction is too long. Almost half a page, they write the background. In 10 marks, introduction should not be more than 2 lines or 3 lines. And that too directly hitting the core demand of the question. And better if you start learning thinkers or something, start with that. Or contemporary news. Then, examples and case studies are missing in most of the cases. So what I have experienced that you can try using subheadings, one-liner explanation and explain with an example or a case study. And in the notes, in the diagram books notes, and there is a specific example sheet. In fact, in my own mains, I had because I had limited time because I'm like to give you my background during my civil services. I'm a mother staying in a joint family. So I was not getting so much time to prepare my own notes. Okay, so what tried using the ready-made examples already available.
So diagramming example sheets are there. If you start learning those examples now and start same example you can use in different questions. It's not like if HRM example is there, you cannot use it in OB. I have used it at different places. So try giving examples and case studies. That is missing in most of the 80% of the students are not giving proper examples. Okay, and try writing short sentences. If I share one copy, 1 second, I'll share. I can share now, Rahul. Yes, yes, you can share. So Tanu is here, and I can see one copy of her also. But before that, I'll go with this. So this is one copy. So in this psychological contract is there. Okay. See, Gauri, she has made. sorry to interrupt. Your PDF is not visible. Only the folder is visible. So I think your screen is not shared properly. Your sharing screen is coming to me. Uh, yeah, that is fine, but only the folder is visible. The copies are visible, but Okay. not the PDF. So you need to share the PDF. Okay. How to do that? You please unshare first. Then, Okay. while choosing what to share, please One choose the second. PDF, Okay. or you choose the entire screen. Understood. Understood. Now it's visible. Yes, visible now. Okay. 1 second. I will start. I'll do entire thing. Otherwise, if I open again, screens document. So this one. Now it's visible, Rahul. Yes, it is. It is visible. Yeah. So if I was evaluating this answer sheet today, so it came into my mind. See, psychological contact 10 marks. When such kind of short note or something is coming, try writing different aspects, two lines, like meaning, definition, features, merits, like types, all this. But in this answer, see, if like she has drawn or she or he, student has drawn this diagram. Can you understand the diagram? Like it is not I can't understand what she wanted to write. So avoid such kind of diagrams. Better not to draw if you are drawing like this. Okay. And then she wrote one example which was not understand. I couldn't understand, and avoid negative examples in positive questions. Like psychological contract, if we understand, it's a kind of contract between an employer and employee. In short, right? It's not a written contract, it's a positive thing. But the example which has been written, it's like it's showing negative impression. So it shows your attitude that you take things in pessimistic way. Avoid writing those examples. Okay. Then now, in this, another one question was there. 1 second. There was one, like in those questions, I'll just say, I don't remember which day question was it. There are certain questions where it's given in question itself, illustrate with examples. I have seen almost 98% of the students' copy, which I have evaluated in that respect. They are writing the theory first, and last they are writing real examples. Why doing like that? You need to have analytical mind. You need to relate those examples to your points. So when you are writing relevant examples just below the relevant point, it gives extra impression on the evaluator. It doesn't show that you have mugged up something, you have mugged up the theory and you have mugged up the examples and you are writing. You have to show the co-linking also. Right? This thing is there. Then deviation I've told long explanation, avoid long explanation, especially in 10 marks. And there are sometimes hidden aspect within the question. You need to identify. For that, you need to do brainstorming almost every day. I would suggest start reading few toppers copies. Same question, do brainstorming and then see the toppers copy, what they have written. But don't take toppers initial copies. Take the later ones.
test series, like just before the mains. Those copies you can take it. And then uh, examples I've told, case studies I've told, introduction, long introduction is there. And one more thing I would like to suggest, this I also did it, and it was very handy for me. I had a small diary because I had limited time. I wanted to keep things ready for myself. Two things I did, and those two helped me a lot. Like I had a small diary where I wrote each and every word in the syllabus is there now. So I wrote one definition. Like for example, if organization structure is there in the syllabus, directly in the syllabus. So I wrote one thinker's definition over there, and I kept it. That diary was only having examples and definitions. So it was handy for me. And before mains, I didn't have to mug up much because I had already learned and that diary a lot. Okay, and that you can revise just before, like second paper is there now, like OBOT paper in lunchtime. That can be revised. Another thing what I did for the paper two, not for paper one. I'm telling everything from paper two perspective. Uh, what I did, I started recording things because in my first mains, I got less mark, around 128 or 130 in paper two. So I started recording things, points. Like someone told me that every term in the syllabus, you should have 5 specific points of that syllabus. Like, if you have organization culture, what do you mean by organization culture? If you have to write features, you should have 5 different points for the organization culture. So in today's copy, one more copy was there. Features of organization. Okay, Chester Bernard's statement was there, is there a conscious and consciously created and activity is one. Definition is there. That question was there. In that question, you need to define first whatever terms are mentioned in that statement, and then you have to define other features. And don't write everything. The candidate has written Fayol's principle, all the Fayol's principles like esprit de corps, efficiency. Fine, those are the features, but you cannot write in just Fayol's principles name. I'm not showing PDF, any PDF, because I don't remember which student copy I checked and this was there. So I'm just telling if I can use board, I can tell. Like Garima, it's like what I wanted to say. If some statement is there and it's written in light of this statement, please explain the features or please explain the limitations. So first try to explain that statement in at least one para. If not, you don't have the points. First try to explain that part, and then you come to the other features or limitations like this. So it shows the evaluator that you are like your presence of mind is good and you are seeing what is written first. Okay. Any other query you have, or Tanu is there so I can if she wants I can discuss on her Yes, paper. it will be better. Those people who are available, if you have the copies of those people, it will be Oh, even. yes, ma'am. Yeah. So 1 second, I'll share. Tanu, which paper should I take? Just a request to everyone, please keep writing the points, whichever point you're finding relevant. Like I have. Any particular thing you want to, or any particular copy you want to discuss, Tanu? Or should I take anyone? Yes, ma'am. Any Actually, copy? I am currently doing financial management, so it would be better if I'll get to know No, the I didn't check current financial problems. management. I checked it this paper two. I don't have your paper one document. And then any subject is okay because I have done it Okay, fine. quite I'll take first early. one only. Okay, this scan is not proper, so I'll take another one. 40. Hmm. Um,
It's coming now. Can you see? Yes, ma'am. One second, I'll take my pen. So in this question, it's written organization structure influences the division of task, grouping of grouping of activities, coordinating the activities, and the overall accomplishment of the task. So like for beginners, what I used to do, I'll tell, I used to mark it like this: a, like organization structure is one. Your Okay, main topic. it is not visible. No, sorry, it's fine, fine, fine. And then I used to mark the subdivision of the questions as A, B, while I was reading for the first time only. Okay, because in ethics, we don't have much time to read again and again. So this practice will help you in longer exam papers. So 3 and 4. So I had this thing, A, B, C, D. In the light of this statement, discuss various components. So these 4 components will come first, and then again it will other various components will come. Garima understood what I was saying at that time. So, like in this question, she has started well because she has explained what is organization structure, but it would be better to learn any definition, any standard definition. You learn it and you quote it everywhere. There is no issue quoting same definition in 2 3 question if the top question comes from the same topic. Ideally, it doesn't happen in the actual exam. It will happen in the test series only. Okay, and then she has written influences the division of tasks. You need to quote example. Here you can start using diagrams. If you are not having much of space, use diagram and explain it. Division of task, like any company you take. Like if I take Reliance only. So Reliance has jewelry store also. Reliance has other store also. You can within Reliance also it's finance, it's production. You can mention it here. Division of task. Okay, and then grouping of activities. Either you do make one diagram on the side, one side, and you can quote different aspect to this diagram. Okay. So here I have written coordinating the activities. You can write linking pins. We have one theory now relating to linking pin in our subject. So you can quote it as an example. So it will show your linking ability also. Then overall accomplishment of goal task. So any goal, if whatever example you are taking here, try using the same example and explaining the different aspects in all the points. Okay. Then other component of the structure, because it was same. See, clarity of authority and responsibility, parity of authority and responsibility. Both are same. Don't try to write n number of points. Just don't increase the number of points. You need to understand that increasing number of points will not help. Okay, you can combine these two and write one example. So all these, see, these 3 are same point only. Scalar chain of command. Right? This is one point, same. Then this is second point. You can have span of control separately, fine. And technology, other components. Yeah. Here also, in such question, what you can do, technology, how it affects the organization structure. Whether it's tall structure or wide structure. It depends upon the availability of technology right now because of the this Zoom and all. Uh, we have generally wider structure globally, right? Easy accessibility of technology and communication technology. We generally have wider structures. All the startups are having wider structure because of the technology availability. Directly, they are reporting to the founder of that startup. Okay.
So like this, you can draw the diagram. Why to write so much when you can explain it with the flow chart in such questions? Okay, and then this is one thing which I wanted to say specifically. Avoid using words. This is for all 99% of the students. Should you are not you cannot command. It should happen. If no one can command what will happen. It could happen or it would happen. It needs to be happened. Try to write in these words. Must, should, must, shall. Avoid all these words. Any other point which you people wanted to ask? Because I don't remember much thing to tell. These are some of the things which I wanted to tell. And one more copy I'll show you. I really liked her way of presentation. Isita, Isita Cancel. Can you see or you're not able to see? Share entire screen. See, Ishita Cancel. HRM. She is writing time also. So I can see whether she is able to write it think within the time or not. You also try to write time everywhere. Use a stopwatch. Okay. See, here she has written, this question was very good, very nicely written. Although much more points can be there, but she has written, covered things. See, the question is you are HR manager of an IT organization operating in India and also in Germany, Sri Lanka, and Saudi Arabia. In the recent meeting, the board of directors, the chairman of the company made a statement of offering peanuts. You will attract monkeys only. Based on this statement, you are required to prepare compensation plan. In one copy, what was written? Compensation plan, benefits of good compensation plan, and demerits of like this. It was written, but it was not linked to what it was asked. Germany, Sri Lanka, Saudi Arabia. Basically, a global compensation plan which is equitable. Right. So this has been written. She has used the diagrams and all very nicely written. Or else you can see the model answer there. This statement is there. This way also can be written. And simply she has written what are the factors which has to be considered. I'm not saying you to write entirely in this fashion also because this is also not correct to write entire answer in a flow chart. A mix of both needs to be there. See, I've written very good presentation, and later on, I have also written don't write in this thing. Here, she has linked. That's why I have written compensation plan for IT industry directly coming from the question. Fixed compensation benchmark salaries at each location. Example: Germany is having high living costs, so there should be competitive pay. Even I know that she was not knowing that whether Germany is having high living cost or not, but she wrote because other countries, Saudi Arabia and Sri Lanka, will have low living standard as compared to Germany because it's in Europe. She has used her common sense. Or everywhere she has written about taking clue from the India only. Country specific allowance, HRA, we give it in allowances. So such kind of innovative way needs to be there. Performance bonus, she has written some example, Germany, Sri Lanka. So hardly in 5 to 10% copies I have this thing, Germany, Sri Lanka, and India mentioned. Everywhere it was normally written. So try using what is written in the question. Okay, and then okay. So she has also written extra, which I told not
I've written here, avoid writing whole answer in flow chart. It is the main demand of question. So some elaboration is required. So don't try to like human resource planning. The question is on this only. And she has written only this thing, process of future human resource planning in a flow chart. Avoid using those methods. If you are making this diagram, good, but you need to explain it as well. Huh. So this is this I wanted to tell from her copy. And one more thing. Uh, Second, if I can see any other copy. Rohit, there is a student, Rohit. He has done remarkable improvement. If I remember, if he is the same student who wrote mains this year. No. He is different one. He is a different one. Okay. Fine. Then so this person is writing to the demand of the question. And in the line with how it is asked in the question, if you see his copy also, this question is there. So on industrial relation, he has explained what it is. There, introduction can be improved, but see whatever is written here from a culture of inclusivity and diversity has linked it, and he has given example also because it is shown told justify your answers with suitable examples. So he has written example here itself based on inclusivity and diversity. In this question, this specific question, if I have to say, many people have written in the last all the examples, well, then ONGC, all these examples they have written in the end. Don't do such things. You need to incorporate within the relevant points. Trust and engagement, ONGC, see it's coming here. Open dialogue and Indian Railways. And then again, the importance, he has not written example. Here he could have used case studies and example, which I have mentioned here. So Rahul, overall, I have covered things which I remembered today. Okay, so I will request everyone to please ask your questions regarding your copies, evaluation, or anything you want to ask. If you don't have the question, you can type no. So Abha, Garima, Tanu, Yadunandan, Yash, everyone. मन में जो भी क्वेश्चन हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. And one more thing, I get comment that, ma'am, please give marks. If I have to give marks, I'll give marks. If I have to only comment if it is good or bad, I will not give marks because improvement is more important than getting marks. Because whatever I will give, it will not be similar in the exam, like UPSC. There is a like huge change. I remember in one subject I used to get very good marks, but I think I didn't get good marks in exam. So don't go by marks because there are few copies where it's written very good, but I have given less mark because I can't give more than 50 to maximum 55% in test right now. एक्चुअली मार्क्स एंड ऑल ना ये आपके इम्पोर्टेंट होते हैं जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं. फुल लेंथ टेस्ट होते हैं तब इम्पोर्टेंट होते हैं. तो उस समय जो मार्क्स मिले वो फिर भी इम्पोर्टेंट होते हैं. अभी के मार्क्स पे आप लोग मत जाइएगा. ये बेसिकली डेली आंसर राइटिंग स्पेशली ना ये प्रिपरेटरी प्रोसेस है. यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी है. तो यहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट होता है, सब्जेक्ट टेस्ट होता है या फुल लेंथ टेस्ट होता है. वहां पर आपको एक आइडिया लगता है अगर मार्क्स मिलते हैं कि ओके आई एम इन द एवरेज और बिलो एवरेज और अबव एवरेज. और बस आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस करना है कि व्हाट इज मिसिंग, हाउ कैन आई इम्प्रूव. इवन इफ देयर इज अ वेरी गुड कमेंट स्टिल यू थिंक ओके आई कैन इम्प्रूव. So that is a entire process, so that the process of improvement is getting more and more deeper.
बस याद करते जाओ, अभी से याद करो चाहे। और पेपर 1 में मैंने इवेलुएट नहीं किया है, लेकिन अगर मेरे को इवेलुएट मिलेगा तो थ्योरी में छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होने चाहिए। 2 सब्जेक्ट्स है जिसमें रियल एग्जाम्पल्स भर भर के मतलब भर भर के। एक आईआर है जिसमें रियल एग्जाम्पल्स आपको खूब मिलेंगे, और एक आपको ये क्या कहते हैं, ऑडिट। ऑडिट अकाउंट्स वगैरह में, एफएम में, सब में रियल एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो दो चार एग्जाम्पल्स लिख के रख लो और वही याद करके वही कोट करो, हर टेस्ट में वही कोट करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट फोकस हैज टू बी ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि जो पूछा गया है, अगर उन्होंने क्वालिफाइड रिपोर्ट पूछी है ऑडिट में, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट का आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। हाँ, यू शुड नॉट जस्ट राइट समथिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। मतलब आपको एग्जैक्टली बताना चाहिए कि क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पेपर 1, and number 2 is the completeness, that you are writing all the points. For example, if suppose there is a question on dividend theory, कोई क्वेश्चन आता है वॉल्टर मॉडल, गोल्डन मॉडल, तो you have to write all the assumptions, all the arguments, all the situations, what are the conclusion, criticism, and write all the point in all the possible ways, है ना। तो पॉइंट पेपर 1 तो काफी आसान है इनफैक्ट, अगर आप बहुत एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक्यूरेसी कंप्लीटनेस। आपको सिर्फ एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। थ्योरी मेक्स योर जॉब वेरी वेरी इजी, एंड या और जो अच्छा। अभी एक और हाँ प्लीज। एक और पॉइंट मुझे याद आया कि अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं लिखती हूँ ना, यूज सब हेडिंग्स। तो अभी क्या कर रहे हैं, सब हेडिंग्स अगर इंपॉर्टेंस के लिए लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ईबीसी लिखा है सब हेडिंग फॉर एग्जांपल, या मान लीजिए हमने एफिशिएंसी लिखा है या इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो बाय फोकसिंग दिस इट विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इट इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन, you are just elaborating these subheading you have written. Okay, you need to have proper way of explaining that subheading. Okay, just वो नहीं लिखना कि ये करें, it is crucial for this, वैसे करके वो explanation नहीं होता। वो वेग है, मतलब दैट इज हाँ, वो बेसिकली। सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको नहीं आता है, you are just making। ठीक है, तो वो अवॉइड कर देना। ये आई वुड लाइक टू ऐड पर्सपेक्टिव हियर, कि हमारे पास 150 वर्ड्स लिखने के लिए वी गेट 10 मार्क्स, है ना। 150 वर्ड्स में हाउ मेनी सेंटेंसेस वी कैन राइट, if average sentence length is say 10 or 12 words, है ना, so we can write 10 to 12 sentences only, 12 to 15 sentences maximum. That means one sentence has a weightage of around 0.7 mark to 1 mark, है ना। तो ये आपको पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि एवरी सेंटेंस इज गोइंग टू ऐड द वैल्यू इन माय आंसर। इट इज बेटर टू राइट less number of word but good content, still you Yes. can get good marks or you will get average marks. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक जो पर्सपेक्टिव, सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव होता है ना, जो मैं देखता हूँ कि 90% केसेस में हमारा माइंडसेट वैसे काम करता है, जहाँ पे भी जैसे गोरी आपने बताया कि लेंथी इंट्रोडक्शन है या एक्सप्लेनेशन अननेसेसरी की है, तो या अनऑर्गेनाइज्ड है कि एग्जांपल कहीं दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट कहीं दिए हुए हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वी आर नॉट प्लानिंग द कंटेंट स्ट्रक्चर इन एडवांस। Yes. एक सबसे मेजर पर्सपेक्टिव जो उसमें बैक ऑफ द माइंड पे काम कर रहा होता है, वो होता है कि पेज भरने हैं। तो मैं जैसे मैं पूछता हूँ ना कुछ लोगों से, भाई आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन क्यों लिख दिया, जरूरत क्या थी इसकी? सर एक्चुअली 2 पेज भरने थे ना, तो मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्क्स आपके कम आ जाएंगे, मार्क्स उनको कम भी आ सामने जाएंगे, वाले को पता चल जाएगा। और काफी सारे पॉइंट आप मिस कर जाओगे। बाद में यू रियलाइज कि यार 2 पेज भी कम पड़ गए क्योंकि इंट्रोडक्शन आपने फालतू लिख डाला। हाँ, एक्चुअली हमें लगता है कि हमें कंटेंट याद नहीं आएगा, हमें 2 पेज नहीं बन पाएंगे, बट मैंने ये देखा है कि अगर आपने पूरी सिस्टम सिंसियरली पढ़ाई की है, आपने रिवीजन ठीक किया, मतलब आपका फाउंडेशन ठीक है, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपके पास कंटेंट की शॉर्टेज होगी। कंटेंट हमेशा एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हमारा माइंड उस लेवल पे पहुंच चुका होता है कि वी आर राइटिंग स्पेसिफिक पॉइंट एंड देन वी कम टू द जनरल पॉइंट्स। तो हमेशा आपका माइंड इनसिक्योरिटी में ये आपसे करवाएगा, इनसिक्योरिटी में हम हमेशा स्टार्टिंग में सब स्टैंडर्ड कंटेंट लिखेंगे। स्टार्टिंग विल बी
विद वेरी वेरी एवरेज कंटेंट, विद कीपिंग इन माइंड कि हाँ यार अच्छे वाले पॉइंट बाद में लिखेंगे क्योंकि वो तो पेज भरने हैं ना। सो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसके लिए सॉल्यूशन होगा कि यू हैव टू प्रिपेयर द स्ट्रक्चर इन एडवांस। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले करके रखनी होगी। आपको पहले से सोच के रखना होगा कि इंट्रोडक्शन में मेरे 2 ही सेंटेंस लिखने हैं, यही आइडियाज मुझे लिखने हैं, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग के अलावा व्हाट यू कैन डू, इफ यू आर राइटिंग सम आंसर एंड यू फाइंड कि यार मजा नहीं आया, देन यू रीराइट दैट आंसर एट द सेम टाइम, आई मीन इमीडिएटली। फिर आप जब वापस से लिखोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि यार मैंने पहले कैसा लिखा था। पहले मैं फालतू में 2 सेंटेंस में एक पॉइंट को लिख रहा था, अभी मैंने सेम पॉइंट को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया। यू हैव टू डू दैट कॉन्शियसली, बट आपको ये कॉन्शियसली करना होगा कि आपने एक आंसर लिखा, उसको सेल्फ इवेल्युएट किया, वहां पर आपने देखा कि नहीं यार ये इंट्रोडक्शन बहुत लेंदी हो गया, या एग्जाम्पल मैंने सही से कोटेशन नहीं किए। देखिए हमें पता होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमें नॉलेज लेवल पे पता है कि ये मिस्टेक हम कर रहे हैं, बट हमारे अभी हैबिट में नहीं आया, राइटिंग में, हमारी थिंकिंग प्रोसेस में, यू नो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपरेशन, है ना। मतलब कि हमें पता है, हमें सबको पता है कि डेली दौड़ने से हमारी हेल्थ फिट होती है, बट मॉर्निंग में फिर भी कोई दौड़ने नहीं जाता, बिकॉज हमारी हैबिट का पार्ट नहीं बना। फिर हम बाद में क्रिप करते हैं कि यार आज फिर से मिस हो गया, आज फिर से नहीं दौड़ा मैंने, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, आई एम नॉट डूइंग दिस, है ना। द पॉइंट इज कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि दौड़ने से हमें फिटनेस हमारी बढ़ती है। वैसे आपको पता है कि अगर हम इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, तो उससे हमारा आंसर इंप्रूवमेंट होता है। तो व्हाट कैन आई डू राइट नाउ टू डू दिस, एंड व्हाट प्रैक्टिस आई कैन ब्रिंग दिस टाइम, सो दैट इट बिकम्स ए रिपीटेटिव प्रैक्टिस फॉर मी। तो आपको कोई स्ट्रक्चरल चेंज लानी होंगे, आपको अपनी हैबिट्स प्रैक्टिसेस चेंज करनी होंगी, देन ऑटोमेटिकली इट विल हैपन, है ना। मतलब कि एक लेवल पे जाने के बाद में ना आपको इसको हैबिट का पार्ट बनाना होगा। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल इफ यू राइटिंग द आंसर, देन यू हैव टू थिंक कि विच डायग्राम आई विल इंक्लूड। आप उस डायग्राम को पहले से सोच के रखो, एग्जांपल भी सोच के रखो, कोटेशंस भी सोच के रखो, थिंकर्स भी सोच के रखो, पॉइंट्स भी सोच के रखो, देन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर rather than directly jumping onto the writing the answer. हाँ, it will take more time. तो जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की उस टाइम को आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड मत करो, आंसर राइटिंग टाइम में इंक्लूड मत करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले टाइम को भी एक्सक्लूड कर दो अपने टाइम लिमिट से। बाद में धीरे धीरे वो आपकी प्रिपरेशन का, आपकी थिंकिंग का पार्ट बन जाएगा। तो बाद में क्या होगा, नेक्स्ट लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, व्हाट विल हैपन कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो साइमल्टेनियसली आप सोचते भी रहोगे, लिखते भी रहोगे, बट स्टार्टिंग में आपको क्या करना होगा, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना होगा और हैबिट पे फोकस करना है, हैबिट पे फोकस करना है। समहाउ यू शुड नॉट जस्ट थिंक कि कैसे भी करके आंसर कंप्लीट कर दे, भाई 2 आंसर डेली लिखने हैं तो लिख कर खत्म करें, वो खत्म नहीं करना है। ज्यादा आंसर लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, आंसर जो भी लिखेंगे उसको ज्यादा इंप्रूवमेंट करने से ज्यादा मार्क्स आते हैं। यानी कि आप चाहे कम नंबर ऑफ आंसर लिखें, लेकिन जो भी आंसर लिखें आपको खुद फील होना चाहिए कि हाँ पहले से मेरा बेटर आंसर है। और देखिए, डोंट एक्सपेक्ट दैट एनीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। ये मत सोचिए कि ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, राहुल सर का लेक्चर सुन लिया है, गौरी मैडम को सुन लिया है और हमें भी पता है पहले से ही, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता, ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं कोटेशन, एक कोटेशन मुझे याद आ रही है, एग्जैक्ट लैंग्वेज मुझे याद नहीं आ रही, बट उसका जो क्रक्स है वो याद है मुझे, है ना। कोटेशन है कि लर्निंग इज नॉट द लर्निंग डू नॉट कम फ्रॉम टीचिंग। जो हम लोग आपको बता रहे हैं, जैसे गौरी मैडम ने बताया, मैंने बताया आपको, बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, उससे लर्निंग नहीं होती। इसका सेकंड सेंटेंस है, द लर्निंग कम्स फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द लर्नर। मतलब इट इज लाइक कि आपको हम स्विमिंग करके दिखा दें या ड्राइविंग करके दिखा दें कि देखो ऐसे ड्राइविंग होती है या ऐसे स्विमिंग होती है, उससे आप स्विमिंग या ड्राइविंग नहीं सीख सकते जब तक कि आप खुद पूल में जंप ना करें या खुद गाड़ी को ना चलाएं। सो द पॉइंट इज कि आपको वो हैबिट में लाना होगा कि ये जितने भी चीजें हम बताते हैं आपको, वो ऑटोमेटिकली आप डेली बेसिस पर आपकी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। और उससे मैजिक क्या होगा कि ऑन द वन हैंड यू विल बी डूइंग इट फॉर कॉमर्स, and on the other hand it will automatically happen in all your GS papers.
वो मैजिक होता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर हैबिट. आपका सोचने का तरीका वैसे बन जाता है. ठीक है, तो just to sum up, first of all you have to do the content structuring in advance, even if it takes more time, no problem. Number two, you have to rewrite some of the answers. I'm not saying ki every time you have to rewrite, but maybe once or twice in a week, and then compare two of your answers, पहले वाला बाद वाला. Then you will be amazed कि यार कितना improvement मैंने किया है, और जो आपने वहां पे improvement किया, that should be your standard. From there you will get real learning कि यार ऐसे लिखते हैं. जब मैंने सोच के लिखा, माइंडफुल होके लिखा, कॉन्शियस होके लिखा, तो बहुत अच्छा आंसर आया. It's just being more attentive. It's not, again, it's not about more number of answers. It's just being more attentive while writing the answer. Even if you write less number of answers, it is good. So, any question, anyone? आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन अप्रिशिएट होगा. गौरी मैडम ने एक चीज और भी मुझे काफी अच्छी लगी कि आपको कोई डायरी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो डायरी होती है ना, वहां से आपको अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है. एग्जांपल्स, कोटेशंस, अपने ही लैंग्वेज में उसको मेंटेन कीजिए. एंड डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट. ये बस सोचिए कि अब तो सारे सब्जेक्ट के लिए बनाएंगे, नेक्स्ट रिवीजन में पूरी डायरी चलेगी बस. मतलब ये है कि एज एंड वेयर, जैसे भी जहां पर हो, जहां पे स्टार्ट कर सकते हो स्टार्ट करो, बात खत्म. अगर आप पहले से कर रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो तो कल से स्टार्ट कर दो. जिस टॉपिक में हो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट इन द गेम ऑफ परफेक्शन, वी आर इन द गेम ऑफ कॉम्पिटिशन, वेयर ऑप्टिमाइजेशन कैन हैपन बट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट हैपन. ओके, एनीवन, एनी क्वेश्चन? मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ. सर आई हैव वन थिंग. जी सर थ्योरी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती है जिसमें हम इवैल्यूएटर सिर्फ एक कीवर्ड स्पेसिफिकली देख रहे होते हैं कि ये वो स्पेसिफिक कीवर्ड उस आंसर में मेंशन है कि नहीं है. तो जैसे गोइंग फॉरवर्ड या तो हमारे ही जो भी हमारी कॉपी चेक हो गई, या तो उसमें अगर बाय चांस वो कीवर्ड्स नहीं हुआ या तो वो मेंशन कर दिया जाए, या फिर एक ऐसे ही जैसे आज एक सेशन हुआ है ऐसा ही सेशन हुआ जाए ताकि ऐसी मिस्टेक्स बता दी जाए कि इस क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स थे जो 90% लोगों ने नहीं लिखे थे जो लिखने चाहिए थे. तो एक ऐसी लर्निंग भी हमें हेल्प करेगी कि वो डेफिनेशन से एटलीस्ट वो कीवर्ड्स ना मिस करें हम एग्जाम में मेन. So, okay, I got one communication that you want the kind of feedback where we can tell you in some questions like these keywords should be there. एक तो ये हो गया. Is there anything else also which I did not get? अभी तो नहीं. अभी एक्चुअली सर मैंने ज्यादा आंसर लिखे नहीं है तो आई हैव नॉट गॉट ठीक मच है, फीडबैक बट अंडरस्टूड. देखिए, कीवर्ड्स, डेफिनेशंस के कीवर्ड्स को ही आप फोकस कीजिए. इनफैक्ट आप डेफिनेशन को एज इट इज रिमेम्बर करने की कोशिश भी मत कीजिए. वो कुछ केसेस में पॉसिबल है जहां पर बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है. In rest of the cases, try to just take care of the keywords because you are not expected to write the definition as it is all the time. Fine. ठीक है, ऐसे वाले सेशंस हम रखेंगे. We can do like once in a month or so. Yes, sir. So am I audible? Yes, audible. Yes. Yes, sir. So a lot of mistakes which ma'am have mentioned, even I have been doing it. So consciously or unconsciously, it was happening from my side also. So it gives a perspective ke what the evaluators are expecting out of us, which I was not aware earlier. So this is helping. Good, good, good. Perfect. We'll keep repeating it. Yadunandan, Abha, Tanu, anything you want to say? सर जैसे लास्ट सेशन में आप वो जो बहुत सारे एग्जांपल्स को इंटरलिंकिंग करा रहे थे टॉपिक से, तो अगर हर सेशन में लाइक फॉर 20-75 मिनट्स अगर ये हो पाए और आप टॉपिक पहले से बता दें कि पूरा ओटी हम लोग एक बार रिविजन कर लेंगे या ओबी, बहुत हेल्पफुल होगा. इससे यू नो लाइक इफ अ मेंटर इज असाइनिंग अ टास्क, वो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, ठीक है करके जाते हैं, एक्साइटमेंट भी होगा. लाइक आई फील ठीक है, we can do that. I'll tell you the chapter names. You can just go through those examples and then we can do the interlinking. एंड इट वाज अ वेरी गुड प्रोसेस. लाइक बहुत काफी एक्टिव लर्निंग था. आज भी वो एग्जांपल्स याद है जो जो डिस्कस हुए थे और जिस जिस टॉपिक में हमने यूज कर पा रहे थे. गूगल का एग्जांपल आज हमारा 20%, 80%. yes, TCS का एग्जांपल लाइक लिटरली आई डिड नॉट सी फॉर द 1 week बट स्टिल याद है. तो वो एक्टिव लर्निंग प्रोसेस यू नो लाइक जैसे स्कूल पे होता था सर, तो
Fine. sometimes need that environment. ठीक है, फाइन फाइन फाइन, वो हम करेंगे। आज के सेशन में मैं चाहता था करना वो, लेकिन मुझे पता था कि नहीं हो पाएगा वो, बिकॉज एक सेशन में एक्चुअली एक ही चीज फोकस हो पाती है अगर हम डिटेल में जाते हैं। तो आगे वाले सेशंस में वो कंटिन्यू करेंगे, वो तो अपना कोई इशू नहीं है। आज के सेशन से आपने क्या सीखा आप? तो आज के सेशन से जैसे सॉरी बट पेपर 2 का आंसर लिखने में काफी डर लगता है मुझको, लाइक आई डू नॉट नो, मीन्स बहुत डर लगता है। मैम ने जो जो समझाया है अब वो मिस्टेक्स याद रख के एंड वो मिस्टेक्स ना करूँ मैं, आई फॉलो दोज थिंग्स। और फिर स्पेशली वो बहुत अच्छा लगा, वो डायरी मेंटेन करना। एंड देन उससे क्या होगा दैट एट टाइम्स फॉर 10-15 मिनट्स कभी भी दिन भर में मिले तो 2-2 पेज भी अगर पढ़ा जाए लाइक कैजुअली, बहुत बार हमें मन नहीं करता स्पेसिफिक चीजें पढ़ने का, तो इससे याद हो जाएगा। स्पेशली डेफिनेशन को रिविजिट करना बार बार इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट वुड नॉट क्रिएट प्रेशर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, so that was a very wonderful point. Right. And like ma'am mentioned and you also told multiple times, और मुझे रिव्यूज में भी मिला है पेपर 1 का कि आप बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखते हो और ये कंज्यूम कर लेता है आपका 3-4 पॉइंट्स कैप्शन में ही आपका पेपर खत्म सारा, लाइक पेजेस खत्म। So do not do this. This makes the examiner disinterested in your answer. तो ये अब उसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगी, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है ये चीज, ऐसा नहीं है कि आप कोई न्यू हो। उसके लिए सजेशन यही रहेगा कि आप ये मत सोचो कि मेरे को अभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी 7 मिनट्स में लिखना है। जैसे राहुल सर ने बोला ना कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ना, पेपर पे ही लिखो, उस क्वेश्चन के ऊपर ही लिखो, एक तो कीवर्ड लिख लो कि हमको ये लिखना है अपने कीवर्ड। ये एक्चुअल एग्जाम में भी करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज स्ट्रेस के टाइम पे क्या होता है, हम जब लिखने जाते हैं ना तो मेन पॉइंट से ही भूल जाते हैं। तो Yes, ma'am. क्या कर, हाँ, तो टाइम कम रहता है तो आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। अभी टाइम ज्यादा लगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट कर देंगे ना तो फिर जाके वो टाइम रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्शियसली अपने आप को ये करो कि मेरे को शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट Okay. आंसर, And मैम शॉर्ट लाइंस। एक और प्रॉब्लम जैसे कभी ऐसा होता है मैम कि कैप्शन पता है पर अंदर जैसे आपने कहा कि इट इज क्रूशियल टू डू दिस, ऐसे करके मत लिखो, ये ऐसा लग रहा है कि आपको वो आता ही नहीं वेग है। होता है, वो है ना, हमारे को क्या सबको समझ में आता है कि आपको इसका मीनिंग, इसके अंदर क्या आना चाहिए नहीं पता है। आपने बस उसको है ना उसकी बस कहते हैं ना राउंड राउंड जलेबी बना दी और कुछ नहीं किया। वो पता चलता है क्या होता है। मैं भी कभी कभी है ना अगर मिस आउट कर जाती हूँ, एक एक पॉइंट में मिस करूंगी, 2 पॉइंट में करूंगी, तीसरे में वो रीड हो जाता है। जनरली आई रीड, Okay, मैम। लेकिन अगर बाई चांस 1-2 पॉइंट में मिस किया जा सकता है, सारे में लिखोगे तो नहीं मिस होएगा, तो वो मार्क्स आपको लेस देन एवरेज ही आएंगे फिर। तो उसको अवॉइड करने का तो मैम तरीका, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तो आप एग्जाम्पल लिख दो, आप एग्जाम्पल से अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। एंड मैम अगर बहुत बार ऐसा है कि मुझे पॉइंट पता है बट कैप्शन माइंड में नहीं आ रहा, उतना टाइम भी नहीं है अभी, तो मैं सीधा पॉइंट लिख दूं क्या? हाँ, सीधा लिख दो, उसमें अंडरलाइन कर देना। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा लिखोगे उसको, तो उसको मतलब आंसर के लिखने के बाद सर्च करो कि उसका क्या पॉइंट लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, वो तभी याद हो जाएगा फिर। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सर। Sir, another point which I would like to highlight कि जैसे दीपा मैम का जो सेशन था और उसके बाद और 2-3 सेशन ऐसे हुए हैं, so I have started gathering a data bank for specific topics के अगर ये टॉपिक पे अगर ये कोई क्वेश्चन आता है तो आई हैव अ प्री-मेड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, और उसके बीच में जो है अभी सपोज फीचर्स हो या फिर उसके इम्पैक्ट्स हो तो फिर वो मैं ऐसे रिप्लेस करता रहता हूँ, बट स्टार्ट एंड एंड रिमेन्स द सेम। सो ये मतलब प्रैक्टिस बराबर है, गो फॉरवर्ड करना चाहिए या? यस, यू कैन डू दैट। बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस स्पेशली जो आपके रिकरिंग थीम्स हैं, जो रिपीटेड थीम्स हैं, वहां पर करने चाहिए बिल्कुल। जैसे सपोज आप ओबी कर रहे हैं, ओबी में परसेप्शन प्रोसेस एक रिकरिंग थीम है, या मोटिवेशन में आपकी कुछ थ्योरीज हैं, लीडरशिप में कुछ थ्योरीज हैं जो रिपीटेड है, वहां पर करना चाहिए, बिकॉज दोज आर हाई यील्डिंग टॉपिक्स and there are high chances that you'll get some of those questions and you'll be directly able to use. So it will be better, it will save your time and it will give a better chance, है ना?
Yes, Gauri, you can leave. Thank you for your time. We have got a lot of perspective from your side. Thank you very much. Thank you and all the best to all. Thank you, Oh. ma'am. Yeah, good night. Good day. So pre-made introductions or pre-made conclusions are most welcome. So keep doing all these things while you are preparing. No need to make it a project कि अब तो सभी के टॉपिक के बनाने हैं, वैसा मत कीजिएगा, otherwise you will feel burdensome after some time or you will miss out some of the things, है ना. मतलब point ये है कि first you have to take care of the basic things, like every topic is covered, then you have good amount of stuff on every topic and everything, then you go for these things. जो भी ये चीजें हैं कर सकते हैं. मतलब ये चीज में इनफैक्ट आई वुड लाइक टू कम बैक टू दैट पॉइंट जो आपने बोला. तो बेसिकली जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ते हैं ना, मतलब जो लोग मल्टीपल टाइम्स पेन दे चुके होते हैं, तो उनके लिए चीज आसान होती है कि वो चीजें ऐड ऑन करते रहे, है ना. बट आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस है, तो उस केस में आप यू डोंट ट्राई टू बर्डन योरसेल्फ टू मच. क्योंकि एक चीज और भी है कि जिस समय वो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, है ना. लेकिन आज मतलब काफी चीजें अवेलेबल हैं ऑटोमेटिकली, तो आपको उतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है जितना उन लोगों ने रिसर्च की थी. दैट इज माय पॉइंट. आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो है उसको यूज कीजिए. एग्जाम्पल्स हैं, कोटेशंस हैं, अगर इतना भी यूज कर लेंगे तो आई कैन एश्योर यू कैन गेट टॉप मार्क्स. इसी को यूज कर लेंगे तो, है ना. बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस ना कि वो नई चीजों के चक्कर में ना हम एग्जिस्टिंग चीजों को भूल जाते हैं. वी थिंक कि नहीं यार मैं दूसरों से बेटर कर रहा हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा कर रहा हूँ, है ना. लेकिन एग्जामिनर को बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि आप ये पॉइंट यूज कर रहे हो कि वो पॉइंट यूज कर रहे हो, बिकॉज दोनों इक्वली वैलिड है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मतलब ओवरडू नहीं करना है. हाँ, आपके प्रोसेस में हो जा रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम. ओके, एनीथिंग एल्स बिफोर वी कंप्लीट टुडे सेशन? सो आज का फोकस हमारा यही था एंड आई होप यू हैव लर्न न्यू थिंग्स. हम और भी इस तरह के सेशंस रेगुलरली करते रहेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम एग्जांपल्स को फिर से रिस्टार्ट करेंगे. जो एग्जांपल्स हमारे छूट गए थे वो एग्जांपल्स की फाइल तो हमें कंप्लीट करनी है, और भी हम कोटेशंस भी कर लेंगे. मतलब कुछ ना कुछ करना ही है. एवरी वीक वी हैव टू डू समथिंग. So can we complete the session? No questions from my side. Okay. I think there is no other question also. Okay, good night everyone.